अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ गेस्ट पेपर इंग्लिश के। हम पहले चैप्टर से क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ हीरोज़ के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फर्स्ट ईयर एट हैरो। तो इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। आपके गेस्ट पेपर 2023 के हैं फॉर ऑल द पंजाब बोर्ड्स, तो आपने ज़रूर इन क्वेश्चन को फोकस करके जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड चर्चिल राइट ऑन हिज पेपर? चर्चिल वॉज टॉट इंग्लिश एट हैरो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक. Was it a gain or loss to him? How did Churchill do his Latin paper? Why did Churchill not go well in the examinations? Why does Churchill call examinations as an inhospitable regions? Why was Churchill placed in the lowest division? What good did Churchill's 3 year stay at Harrow do him? How did Mr. Somwell teach English in after years? How did the knowledge of English stand in good stead for Churchill? What was Churchill's view about the learning of English language? Next, we have the hitchhiking across the Sahara. Questions taken. How did Christopher develop interest for crossing the Sahara? Who was Professor Claude Bellingham? ठीक है. What did the driver of the truck tell Christopher about three Englishmen who had attempted to cross the desert? What was the most difficult and dangerous stage of the journey faced by the Christopher? How did Christopher manage to get a seat in the weapons carrier? Give an idea of the size of the Sahara. How does the writer compare Sahara with England? What was the result of Christopher's foster mothers threatening to him to Timbuktu? What had Christopher's foster mother to do with his desire to see distant places? Compare and contrast the two desert cities, El Golia and In Salah. Describe the desert city named Gardia. Next, we have what do you know about Robert Christopher and what is the location of the Sahara Desert? Last question हमारे पास है hitchhiking across the Sahara का. Describe the events that led to the killing of the camel. नेक्स्ट हमारे पास जो है हीरो दैट इज़ सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर के क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ डिड द ऑक्सफोर्ड टीम make penicillin more effective? Who was Fleming? What did he discover penicillin? ठीक है. Give an account of early life of Fleming. What was the chief defect of the antiseptic method? Describe how Fleming discovered penicillin. Was Fleming proud of his discovery? How did Fleming discover lysozyme? In what respect is penicillin better than the chemical antiseptic? What is the antiseptic method? Write a brief note on penicillin as a wonder drug. What part is played by the by the white cell in the blood of the human body? How did Fleming pave the path for other discoveries in the medical field? Describe the early life of Fleming and his achievements. नेक्स्ट हमारे पास हीरो है लुइस पास्चर. गिव सम इंस्टेंस ऑफ लुइस पास्चर्स patriotism, or why was Pasteur called a patriot more than a scientist? Why was the use of carbolic acid abandoned? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड पास्चर शो द वे टू अदर साइंटिस्ट? व्हाट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन? हाउ डिड पास्चर प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन was not a fact? What is hydrophobia or rabies? What happened to Pasteur on his marriage day? What did Pasteur and Lister do in the medical field? How did Pasteur discover the method of making vaccines? Write a note on the scientific achievement of the Louis Pasteur. नेक्स्ट वी हैव द मुस्तफ़ा कमाल. तो मुस्तफ़ा कमाल के क्वेश्चंस देखें. डिस्क्राइब द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ मुस्तफ़ा कमाल. डिस्क्राइब द एजुकेशनल रिफॉर्म्स. हाउ डिड मुस्तफ़ा कमाल चेंज ओल्ड टाइटल्स? Why was Mustafa Kemal sent to Anatolia? Describe the Mustafa Kemal's activities in Anatolia. Who was Mustafa Kemal? How did Mustafa Kemal save Turkey from foreign domination? Why is he called the father of the modern Turkey? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मुस्तफ़ा कमाल का. व्हाट वर द टर्म्स ऑफर्ड टू टर्की बाय द अलाइज? When and where was the Turkish Grand National Assembly formed?
Which two major reforms for women did Mustafa Kemal introduce? Describe the reforms introduced by Mustafa Kemal with reference to change in the dress. नेक्स्ट वी हैव द गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल. उसके हमारे पास क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले यहाँ से देखते हैं हमारे पास. ब्रीफली डिस्क्राइब द फेयरवेल स्पीच ऑफ मिस्टर चिप्स. हु वॉज मेल्ट्रम एंड हाउ डिड ही डाई. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्क्राइब कैथरीन्स ट्रेजिक डेथ. देन वी हैव द डिस्क्राइब ब्रीफली लिनफोर्ड्स मीटिंग विद चिप्स. थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है हु वॉज सर जॉन रिवर्स. Who was Cartwright, who was Chipsville. ठीक है. What was Chipsville. ठीक है. Describe the death scene of Mr. Chips. Narrate the activities of Mr. Chips after his retirement. Who was Cole. When and where Catherine and Chips got married. Who did Chips entertain his victories. ठीक है. Sorry, visitors. How did Chips entertain his visitors. Where did Chips shift to after his wife's death? What changes did Catherine bring in Chips? Who was Linford? Then we have the question who was Linford? Then we have what kind of novels Good by Mr. Chips is? Who was Mrs. Wicked? Who was Forrester? And why did Chips remember him? Why did Mr. Chips join Brookfield School again? Whom did Chips call stink merchants? Why was Ralston not popular in Brookfield? Why was spring 1896 important for Mr. Chips? Write a short note on Brookfield. Write a short note on Brookfield School's contribution to the glory of England. What kind of books were read by Mr. Chips? ठीक है. What were Mr. Ralston's allegation against Mr. Chips? How did Catherine help Chips in the matters of discipline? Catherine made Mr. Chips a new man. Is it true? How did Chips measure his time? What happened to Chips in 1913? यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को. Who was Meldrum and how did he die? Describe briefly Linford meeting with Chips. How did Chips serve Ralston? ठीक है. Who was Mrs. Brule? Then we have the question what was the reason that led to the quarrel between Chips and Ralston? What were the two things Chips had never done in life? How did Mr. Chips meet Catherine for the first time? Next we have who was Ralston? What kind of person was Mr. Ralston? Was Ralston a popular personality? Then we have what kind of political views did Catherine have? What memories of Catherine Bridges haunted Mr. Chips? What notion Chips had about women? What request did Chatteris made to Chips about helping him? What April foolery did Chips face? When and why did Mr. Chips retire? Who was Cartwright? Then we have the how much popular was Catherine at Brookfield School? What do you know about Flunkner? Draw a character sketch of Mr. Chips. Then we have write a note on Chips' humor. How was Chips' death announced? Who was Weatherby? ठीक है. What advice did Mr. Weatherby give to Mr. Chips? What was the when was the Brookfield School established? What advice did Marywell give to Mrs. Wicked about Chips? What type of school was Brookfield? Who was Collingwood? When did Mr. Chips retire and which things were presented at his retirement? So these are all the questions of the Mr. Chips. आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव सम इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स फॉर द 2023. जल्दी से देख लें. अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस. जू हो सकता है आपका, हिल स्टेशन हो सकता है या पिकनिक पार्टी हो सकता है, इन्फ्लेशन है या प्राइस हाइक है. नेक्स्ट है अ क्रिकेट मैच या हॉकी मैच, इलामा इकबाल या फेवरेट पर्सनैलिटी, मिरेकल्स ऑफ कंप्यूटर या ब्लेसिंग और कर्स ऑफ कंप्यूटर, अ रोड एक्सीडेंट, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, टेक्निकल एजुकेशन, माई लास्ट ईयर स्कूल या माई फर्स्ट ईयर कॉलेज और स्कूल. ठीक है. या हॉस्टल लाइफ, प्लेजर लाइफ एट कॉलेज. देन फेस्टिवल्स है, सिटी लाइफ है, प्रॉब्लम्स ऑफ सिटी लाइफ है, लाइफ इन अ बिग सिटी है, टेररिज्म है,
प्लेस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी है, मोबाइल फ़ोन है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन है, यूजेस ऑफ साइंस है, साइंस इज़ अ ब्लेसिंग और कर्स, ये साइंस वाला हमारे पेपर में भी आया था तो आपने इसको ज़रूर अच्छे से करना है। माई एम इन लाइफ है, पैट्रियाटिज़म है, वाई आई लव पाकिस्तान, वाई आई लव माई कंट्री, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, देन माई हॉबी है, विलेज लाइफ है, लाइफ इन अ विलेज है, और पोल्यूशन है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स, तो आपने ज़रूर इनको अच्छे से करना है। मैं 10 इम्पॉर्टेंट ऐसे की पहले वीडियो भी बना चुकी हूँ, आपने उसको भी ज़रूर देख लेना है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पर ये मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं आपके लिए, तो आपने ये सारे ईडियम्स देख लेने हैं, एक बार अच्छे से कर लेना है इनको तैयार, और दीज आर इम्पॉर्टेंट, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको पढ़ते रहें। ये भी मेरे पास ईडियम्स की लिस्ट है, तो आपने ईडियम्स को देख लेना है, अच्छे से देख लें। मैं आराम से उसको ऊपर कर रही हूँ ताकि आप देख लें आराम से, और आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको बाद में अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दीज आर ऑल द ईडियम्स जो हमारे गेस्ट पेपर्स के अंदर हैं, तो आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट पर मेरे पास है आपका ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपने ये भी ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स देख लेते हैं और इनको अच्छे से करके जाना है। हमारे पास ये पहला पैराग्राफ है, देन सेकंड है, तो मैं आराम से स्क्रॉल करती हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपने देख लेना है और आपने इसको अच्छे से करके जाना है। मैं आपके लिए आराम से ऊपर कर रही हूँ। 1 हो गया, हमारे पास 2 है, देन 3 है एंड 4 है हमारे पास। तो ये आपने सारे पैराग्राफ्स देख लेने हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पर ये आपके पास 5 वाला पैराग्राफ है, ट्रांसलेशन का 6 है एंड आपके पास 7 है एंड आपके पास 8 वाला पैराग्राफ है। दिस इज़ आर 9 पैराग्राफ, देन 10 है, उसके बाद 11 है, 12 है एंड ये 13 वाला पैराग्राफ है। तो आपने इसको अच्छे से देखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका 14 वाला पैराग्राफ है, देन 15 है एंड उसके बाद 16। ये आपके थे इंग्लिश के सारे गेस्ट पेपर, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आपने इनको अच्छे से करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझे कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।